2026 is going to be the job shock year for the world, and ये कहना है godfather of AI Geoffrey Hinton का. And for India, Niti Aayog, which is the apex think tank of the country, has already estimated that AI could disrupt almost 25% of the tech jobs in the country. But real risk AI नहीं है. Real risk ये है कि हमारे students and professionals बिना clarity के career decisions ले रहे हैं. अगर आप भी अपनी AI जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं by learning AI tools और coding, you are already starting at the wrong place. ये वीडियो उन कॉलेज स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है जो हर जगह AI का नाम तो सुन रहे हैं बट ये नहीं समझ पा रहे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. Let me simplify this with my own experience and my interaction with Mr. B. Ravindran, who is a professor at IIT Madras and one of India's finest AI leader. Mr. Avikshit Bhushan is the Vice President of Asia Pacific and Japan at Aerospike, and he has now worked for over 25 years in the tech industry. Mr. Vibhav Mithal, Associate Partner at Anand and Anand, and he is one of the topmost lawyers in the AI field. To begin with, first, 3 habits beginners must build for the AI era. Habit number 1, don't just learn AI, learn how to use AI. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज एंड टर्मिनोलॉजीज को समझना ज़रूरी है, बट ऑलमोस्ट ऑल एक्सपर्ट्स एग्री करते हैं कि हर किसी को AI इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं है, बट AI अवेयरनेस ज़रूरी है. एंड इसके लिए अपने डोमेन में AI टूल्स का यूज़ करें, चाहे वो स्टडीज़ हो, जॉब हो, कंटेंट हो या रिसर्च हो. अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को LLM टूल्स जैसे ChatGPT, DeepSeek और Grok की हेल्प से और बेटर करें. साथ ही साथ रिपीटेटिव टास्क को AI की हेल्प से रिप्लेस करें. हैबिट नंबर 2, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग विदाउट हाइप. AI बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है, लेकिन बिना सोचे समझे ट्रेंड्स को फॉलो करना डेंजरस हो सकता है. तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ट्रस्टेड एक्सपर्ट्स को फॉलो करें. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एक्सपर्ट्स एज सजेस्टेड बाय मिस्टर B. Ravindran sir is Andre Karpathy. Habit number 3, verification and critical thinking. Yes, AI can be wrong, and that's why experts suggest AI output को हमेशा क्रॉस चेक करें और AI को एज एन असिस्टेंट यूज करें, अथॉरिटी की तरह नहीं. Second, I, along with the experts, have compiled a list of books and courses for the beginners. Must-have courses for beginners to start with include AI for Everyone by Andrew Ng and Generative AI for Everyone, again by Andrew Ng. After this, if you want to go advanced further, go for AI lectures from MIT and AI lectures from Stanford on YouTube. Now, books. A Brief History of Intelligence by Max Bennett, AI Snake Oil, Human plus Machine, Reimagining Work in the Age of AI, and AI Ethics by Mark Kokelberg. Third, should beginners watch AI-related videos regularly? Yes, but with filters. All experts agree that watching AI-related videos are helpful only after verifying the background of the creator. It builds familiarity with technologies, terminologies, concepts, and ongoing developments. But it's better to stay away from AI-generated video because they blur the line between what is real and what is fictional, जो beginners के लिए confusion create करता है. So, for the next 3 months, the most important things you need to do are: first, make these 3 habits a part of your daily life. Second, start with any of the recommended books and courses to develop an overall understanding. And finally, watch AI-related videos from credible sources. Thank you. Stay tuned. Jai Hind.